Hey guys, what's up? This is Mohit Biz from Fit India, and this video is about can you build muscles or can you lose fat without counting calories or without counting macros. So recently I just posted a video of my fat loss transformation on YouTube, and I was just going through the comments and एक बंदे ने comment किया था कि भाई पूरी जिंदगी हम कैलोरीज एंड मैक्रोज थोड़ी ना कैलकुलेट करते रहेंगे. वी आर नॉर्मल पीपल, वी जस्ट वांट टू स्टे फिट एंड हैव अ डिसेंट फिजिक, एंड काउंटिंग मैक्रोज, काउंटिंग कैलोरीज, वेइंग स्केल पे अपना खाना रखना, इट्स जस्ट टू मच एफर्ट्स. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ नॉर्मल पर्सन टू डू दैट एवरी डे, क्योंकि सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं एंड दिस टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम. सो दिस कॉमेंट रियली हिट मी. So because he was right in a way. Obviously you cannot do it every day. It's like time consuming thing, and obviously you have a lot of things in your life, and ये सबसे important thing नहीं होगी आपकी life में obviously. So in all my videos I talk a lot about counting calories, macronutrients, protein, carbohydrates and fats. आपने देखा होगा मेरी full day of eating video में I have a weighing scale, उसके ऊपर I'm weighing my food and all that stuff. So I decided to make a video on it, that can you build muscles and lose fat without counting your calories, without counting your macros? So the answer is yes and no both. Yes, because जो मेरी अभी transformation थी, I transformed from this to this in like 3.5 months. And let's just say it took me 100 something days. And in 100 दिन में से मैंने सिर्फ 20 या 30 दिन अपनी कैलोरीज एंड अपने मैक्रोस काउंट किए होंगे. एंड दिस इज अ सॉलिड कट. मैंने आई श्रेडेड अ लॉट ऑफ माय बॉडी फैट, सो इट वाज अ गुड कट. आई लुक ऑसम, आई एम वेरी हैप्पी. एंड मैंने सिर्फ 20 से 25 दिन अपने मैक्रोज, अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करे होंगे. हाउ डिड आई डू इट? आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा. सो दिस इज बिकॉज इट्स बिन ईयर्स सिंस आई एम लिफ्टिंग. इट्स बिन लाइक 4+ years. एंड स्टार्टिंग में आई डिड कैलकुलेट माई कैलोरीज every day. I weighed my food and I inputted it on MyFitnessPal application, जो मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि कैसे कैलोरीज एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैलकुलेट करते हैं. सो मैं ये सब करता था, weighing my food, then inputting every entry in MyFitnessPal application. So it took time, but मैंने उसको एक पॉजिटिव तरीके से देखा कि I was learning things. Then with time धीरे 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 I could eyeball things. मुझे पता था यार ये 200 ग्राम चावल है. मुझे देख के आइडिया लग जाता है ये 200 ग्राम चावल है. दिस इज लाइक, ठीक है, 2 ब्रेड्स हैं, दिस मस्ट बी 50-60 grams ऑफ ब्रेड. ठीक है, इतने से ओट्स हैं, इट मस्ट बी 20 grams ऑफ ओट्स. एक एप्पल है, इट मस्ट बी 100 grams ऑफ एप्पल. स्कूप ऑफ प्रोटीन तो चलो पता लग ही जाता है. एंड 100 grams ऑफ चिकन है, इसमें कितना प्रोटीन है ये पता लग जाता है. सो धीरे धीरे ना आपको वो चीज़ें पता, खुद से पहले ही पता होंगी, क्योंकि यू हैव बीन डूइंग इट सिंस अ लॉन्ग टाइम. सो अब मेरे कट में क्या था, आई स्टार्टेड माई कट. मैंने अपना एक कैलोरी और मैक्रोन्यूट्रिएंट गोल बना लिया. ठीक है, ऑब्वियसली जब आप कट करोगे आपको भी बनाना चाहिए, या आपने बना लिया होगा, आपको बनाना चाहिए. सो फर्स्ट डे यू विल कैलकुलेट योर कैलोरीज. ठीक है, यू यूज अ वेइंग स्केल, देन यू विल इनपुट योर एंट्रीज इन योर एप्लीकेशन, विच एवर एप्लीकेशन यू यूजिंग. आई रिकमेंड MyFitnessPal, बट बहुत सारी एप्लीकेशन सर. सो आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन. फिर क्या होगा कि obviously because when you're cutting, so every day you're eating kind of the same food. बहुत ज़्यादा fluctuation नहीं होंगी food में, क्योंकि we don't have much calories to play with. So मुझे पता लग गया कि हाँ भाई इतना 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 खाने से मेरे को इतनी इतनी calories per day मिल रही है. Suppose for me it was like 2000 calories hit हो रही हैं. So धीरे धीरे मैं मैंने एक दिन calories calculate नहीं करी, but I ate kind of the same food with the same quantity. तो ठीक है, but back in the mind I knew कि मेरी हाँ 2000 calories हो गई होंगी. Obviously when you're not counting, थोड़ा fluctuations हो सकता है. It could be 1950 to 2050, but I was somewhere around my 2000 calorie target. So next day also not counting, but kind of eating the same food. धीरे धीरे ऐसा चलता गया. So I was also checking my body weight on a weighing scale, and वो drop हो रहा था with every week. So that's how I knew हाँ सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है. But there came a time when I got stuck with my weight. मैंने 86 किलो से अपना कट स्टार्ट किया था, एंड 80 किलोज पे आई गॉट स्टक. तब मैंने सोचा कि यार मे बी आई एम मिस्टेकिंग विद माई कैलोरी कैलकुलेशन. मैं ढंग से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ. तो बीच में एकदम से आई कैलकुलेटेड माई कैलोरीज वन डे. ठीक है, टू सी इफ आई एम रॉन्ग और नॉट. एंड या आई वॉज गोइंग अ लिटिल बिट अप देन माई टारगेट. अगर मेरा टारगेट 2000 था तो आई वॉज लाइक 2100, 2150 समथिंग. तो ठीक है, it was a reality check for me. Mohit, calculate for 3-4 more days. Then I did that.
वापस मैं 2000 कैलोरीज करने लग गया, फिर धीरे धीरे करके वापस मैंने छोड़ दिया अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करना. Then it all came back. I dropped more weight from 80 से 79, 78. So this is how I went. So I wanted to give you a clarity on this topic. This is how I do it. But the thing is that मैं application में अपनी entries नहीं डालता हूँ अब for most of the days. I know I have to use my MyFitnessPal application. That's my go-to app. But I have not been using it since a long time now. हो गए 4-5-6 महीने. Because 5-6 महीने के उससे ज़्यादा ही हो गए. It's been 8-9 months. But I do weigh my food. If I'm making my shake, जब मैं oats डाल रहा हूँ तो I keep the blender over my weighing scale. राइस में मैं करता हूँ, जब प्लेट में डाल रहा होता हूँ तो वेइंग स्केल के ऊपर रख के डालता हूँ. इट जस्ट टेक 10 seconds. आपको प्लेट में तो एनीवे डालना ही है ना, तो आप उसके नीचे वेइंग स्केल रख दो. और वेइंग स्केल ऑलरेडी मेरे किचन में हमेशा रेडी पड़ा रहता है, all charged up. So that's not very time consuming. Time consuming part is, and the irritating part is that you have to use your phone and entry करनी पड़ती है एप्लीकेशन में कि आपने क्या खाया. तो मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई काइंड ऑफ नो कि हाँ ठीक है मुझे इससे इतना कार्बोहाइड्रेट्स, इतना फैट्स, इतना प्रोटीन मिल रहा है. सो ऑब्वियसली आई कैनॉट बी एग्जैक्ट. आई कैनॉट बी एग्जैक्ट, but I know I have an idea. ठीक है, I'm getting at the end of the day I'm having around 180-ish grams of protein. वो 170 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है. Doesn't really matter in the long run, but staying consistent and having an idea is what really matters. So this is how I go. And obviously when you're cutting you have to be more specific. And for the first time in my life when I've cut, I have not counted my calories for majority of the days. And honestly मुझे लग रहा था मैंने fuck up कर दिया बहुत ज़्यादा, नहीं होगा. But it ended up quite well, as you can see in my pictures. And bulking में you have a little bit of liberty. थोड़ा सा over calorie भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कम भी चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है. But bulking में you can be a little liberal. But cutting where you have to be a bit strict. But it is very much possible that you lose your weight without counting calories, without using your application every day to input your data. But if you're a beginner, I do recommend it to do it every day. I do recommend it because don't think कि ये चीज़ भाई मेरे को बहुत tiring है, बहुत efforts है. But think of it as a learning thing because you'll get used to it. धीरे धीरे you will become a pro. धीरे धीरे you will know कि हाँ 100 grams of rice I'm getting this, ठीक है, इसमें I'm getting this, इसमें I'm getting this. And slowly and gradually you will be able to eyeball the food. एक रोटी है, इसमें I'm getting 18 grams of carbohydrates. ठीक है, रोटी का वेट इतना लग रहा है मुझे. 100 grams of राइस लग रही है मुझे, इतना सा राइस है 100 grams होगा. ठीक है, एक रोटी है ये 50 ग्राम की होगी. तो ऐसे ऐसे ना दिमाग चलने लग जाता है, मेरा दिमाग ऐसे चलता है. तो आई नो इफ यू डू इट इनिशियली, धीरे धीरे आपका दिमाग भी ऐसे चलने लग जाएगा. एंड थैंक यू सो मच टू द गाय हु asked me this question. This is a very important question because I see myself as a fitness lifestyle YouTuber. I want to tell you things which you can implement in your life and which will actually make your life smooth and which will also help you to achieve your fitness goals. I will never tell you to do super strict things because I know कि हाँ क्योंकि हम सिर्फ जिम नहीं करते हैं. We have our own life और चीज़ें भी हैं करने के लिए because I myself have my job and stuff. So I'm not the guy spending 3 hours in the gym and पूरे दिन preparing my meals, eating food, meal timing भाई 4 बजे खाना 6 बजे खाना. I'm not that kind of a person and never will be. But so I like to share things which will actually make your life simple yet help you achieve your fitness goals. And मैं हमेशा बोलता हूँ please do follow me on my Instagram. My Instagram handle is Mohit_best. I'm very active there. You can see my physique updates, my funny posts, and you can ask me your fitness related questions there and comment down below. I read each and every one of your comment. I might not be able to reply to every comment, but I read every comment. So bye, I'll see you in the next video.